Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 18th of March. The session is quite important and interesting students, so stay tuned with us till the end. In this video students, we will be talking about a DGCA license that has been granted to Amravati Airport. Next thing we will be talking about a ministerial roundtable on women's empowerment that was held at the 69 CSW. Next thing we will be talking about a contract worth 11,000 crore rupees loan agreement for Amravati development. Next thing we will be talking about is an MOU that has been signed with Kerala's EMC for pump storage projects. And many more news in this video will be discussed students, so stay tuned with us till the end. Also students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning, which will be very beneficial for your learning. Weekly current affairs, monthly current affairs and topic wise are uploaded regularly. Also students, if you are new to our channel, do subscribe to us. We are one stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one stop solution for current affairs. We have an application student by the name Careers Cloud, which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded it, you can log in it through your Gmail ID. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. In our course, you will be able to find the quizzes that are uploaded, which will help you enhance your learning. We make sure to cover multiple banking exams that will help you to land a better job. That includes your IBPS, RRB, SBI PO and other banking related exams. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with national affairs students. First is DGC has granted a license to Amravati Airport, that is in Maharashtra, for flight operations. Very important students, take a note of this, right? DGCA, Directorate, that is your Directorate General of Civil Aviation, under the Ministry of Civil Aviation. They have recently granted the aerodrome license, right? And it was granted to Amravati Airport in Belur in Maharashtra. Very important students. And once this airport is operational, it will be the third commercial airport under the Maharashtra Airport Development Company Limited. Next is international affairs. Government of India and UN Women, they have co-hosted the ministerial roundtable on women's empowerment at the 69 CSW. What is the CSW? CSW is your Commission on Status of Women. So basically to empower women, right, to enhance them or enhance their learning, their skilling, and also to enhance them so that they can work together in various self-help groups, to promote them to become entrepreneurs, to enhance their learning in the STEM courses, that is science, technology, engineering and mathematics, right? So this was the 69th session of the Commission of the Status of Women, and during this, Government of India and UN Women, they together co-hosted this ministerial roundtable on the women empowerment, right? Next is students APCRDA, that is your Andhra Pradesh Capital Regional Development Authority, and New Delhi based HUDCO, that is Housing and Urban Development Corporation Limited. This comes under the Ministry of Housing and Urban Affairs, and they together have signed this 11,000 crore rupees contract, and this is for the loan arrangement for Amravati development, right? So this 11,000 crore loan, this is a part of the 26,000 crore loan for the development of the phase 1 of the Amravati region, right? This loan will be bridging the funding gap for the development of Amravati's redevelopment. Correct? Very important. The total estimated cost for the redevelopment of Amravati is expected to be around 50,000 crore rupees, right? And here World Bank and Asian Development Bank, they together have also committed 15,000 crore rupees here for the development of the Amravati.
right? What is Amravati? Amravati is the capital city of Andhra Pradesh. Next is REC. They have signed an MOU worth 18,360 crore rupees with Kerala's EMC. What is EMC? EMC is your Energy Management Center, right? And this is for the pumped storage projects. Here under this MOU, REC, they will be financing 18,360 crore rupees in the pump storage segment or in pump storage projects in Kerala in the next 5 years, right? And here remember, this EMC based in Trivandrum, Kerala was established in Feb 1996, and this is an organization that comes under the Department of Power in the government of Kerala. Next is awards and recognition. Next is RBI. They have won the UK's Digital Transformation Award 2025 for tech initiatives. I repeat, Mumbai, Maharashtra based India's central bank RBI, they have been selected as the recipient of the Digital Transformation Award 2025 by London UK based central banking publication. And here RBI, they have received the award in recognition of their technology driven initiatives is for Sarthi and for Prabha. What is Sarthi and Prabha? We will be looking at them. Sarthi, first thing, right? This word Sarthi, it is derived from Hindi meaning charioteer, and this system was formally launched in 2023. This Sarthi was designed to digitalize all the internal workflows of RBI and allow the members, employees to store and share documents securely digitally. This was Sarthi. Second is your Prabha portal. Prabha means smooth flow in Hindi, right? It is a centralized, secure, web-based platform that allow the individuals or entities to apply online for regulatory approvals, licenses, and authorizations from RBI. So for these two, Prabha portal and for Sarthi, right? For these two, RBI has recently received the Digital Transformation Award 2025 by London UK-based central banking publication. Very important. Where is the headquarter of central banking publication? It is London, UK. Established in 1990. Next is appointments and resignation. Mark Joseph Carney sworn in as the 24th Prime Minister of Canada. As you can see him in the picture here, right? A former central banker and Canadian politician was appointed as the 24th Prime Minister of Canada. He will be succeeding whom? He will be succeeding Justin Trudeau after his 9 years of tenure. Next is science and technology. ISRO has recently conducted the flight acceptance hot test of cryogenic engine for LV-M3-M6 mission. What is this LV-M3? It is launch vehicle M3-M6. Correct? So it is ISRO that has successfully conducted the flight hot testing of this indigenous cryogenic engine C20, right? And it is for the mission of the LV-M3 launch vehicle. In this test, the engine was fired for a maximum duration of 100 seconds for the first time under the non-vacuum conditions using nozzle protection system. And here it will be used in the Chandrayaan 5 and Lupex mission. Next is your ISRO and SCL. They have developed a 32-bit microprocessor for space applications. I repeat, recently the Bengaluru, Karnataka based ISRO and Chandigarh based Semiconductor Laboratory, they handed over the first production of the two 32-bit microprocessors that are Vikram 3201 and Kalpana 3201 and Kalpana 3201. So these are the two microprocessors, 32-bit microprocessors, right? They were handed over, the first production of them were handed over recently, and it is ISRO that is work and Chandigarh based Semiconductor Laboratory that is working on these two microprocessors, right? I repeat again, first is your Vikram 3201 and second is your Kalpana 3201. And these two microprocessors, 32-bit microprocessors, will be used where? They will be used for the space applications. Next is related to environment, students. New eel species has been discovered off the Toothukudi coast named after the Tamil language, right? And it belongs to the genus Erisoma and named Tamilicium after the world's oldest language, Tamil. So this is the name of the new eel species that has been discovered. Next is related to sports, students. We are talking about the 5th edition of the Khelo India Winter Games that is scheduled to take place in Ladakh and Jammu and Kashmir. That took place in Ladakh and Jammu and Kashmir, and in the medal tally, it was Indian Army that has secured the top
in the top position in the medal tally, right? This event was funded by whom? It was funded by the Ministry of Youth Affairs and Sports. And in this Khelo India Winter Games, more than 400 athletes from various states and union territories participated. Correct. What was the mascot? As you can see on the left side here, this is a snow leopard, right? This was the mascot here, right? Very important, students. And here you can see the medal tally. It is Indian Army first, Himachal Pradesh second, Ladakh third, and Maharashtra on the fourth position. Next is Lando Norris has won the F1 season opening Australian Grand Prix 2025. So who won the Australian Grand Prix? It was won by Lando Norris. As you can see him in the picture, he drives for McLaren. Right? So Lando Norris on first position, second Max Verstappen, and third George Russell. Next is your Indian Masters clinched inaugural IML 2025 and has beaten West Indies Masters by 6 wickets. See this India Masters cricket team, it was led by Sachin Tendulkar, right? And this is an event where the retired cricketers, they play, correct? And India Masters, they have clinched the inaugural IML, that is your International Masters League 2025 title, and we have beaten West Indies in the final by 6 wickets, right? We defeated whom? The West Indies in the finals. The West Indies was led by whom? It was led by Captain Brian Lara, and Indian team was led by Sachin Tendulkar. Next is renowned audio poet and Padma Bhushan awardee Ramakanta Rath has recently passed away. As you can see him in the picture here, right? Ramakanta Rath passed away at the age of 90 in Bhubaneswar, Odisha, and he was born in 1934 in Cuttack, correct? And he was honored with Padma Bhushan also. He is a renowned poet, Odia poet specifically, who recently passed away. He was honored with this Padma Bhushan in 2006. Next is member of Easterville Royal Family of Mewar and chairman of HRH Group of Hotels, Arvind Singh Mewar has recently passed away. As you can see him in the picture, he died at the City Palace in Udaipur at the age of 81, born in 1944, right? And as we saw, he was the chairman of the historic resort hotels, that is HRH Group of Hotels in Udaipur, and chairman and managing trustee of the Maharana of Mewar Charitable Trust Foundation. Next is World Sleep Day, students. We observe this day on 14th of March, and this day is observed across the globe on the Friday before the spring vernal equinox, right? It is observed on the Friday before spring vernal equinox. This is to raise awareness, as we can see here, this is to raise awareness about the importance of a good sleep. This year World Sleep Day was observed on 14th of March, and this was the 18th edition of the annual sleep day that was observed. There is a slogan, students, here, make sleep health a priority was the theme here. Next is National Vaccination Day, observed on 16th of March. This day is observed to create importance of the timely vaccinations, right, and the significance of vaccines in the public health. Correct. National Vaccine Day commemorates the first dose of the oral polio vaccine that was launched in 1995. Correct. Next is Ordnance Factory Day. It is observed on 18th of March. This day is observed across India to mark it is observed by Ordnance Factory Board. It is observed basically why it marks the establishment of the first ordnance factory in India in Kolkata, West Bengal in 1801. So in its commemoration, this day is observed. These factories, they are involved in the production, testing, logistics, research and development of wide range of products that are related to land, sea and air systems. Next is related to state news, students. Tamil Nadu's Finance Minister Thangam Thanerasu has recently presented the budget for FY26 with a total expenditure of 4,39,293 crore rupees. Correct. Here you can see this is the total budget here, and total receipt of 3,32,332 crore rupees. Here you will be seeing this amount has been allocated for education, for urban development 34,000 crore, for rural development 29,000 crore rupees has been allocated. So that's all for the day, students. Now let's move to some revision part that will be beneficial for your learning.
Next is, what type of digital platform was launched by South Indian Bank under SIB Quick PL platform on 24th of Feb for new customers? It is personal loan. Next, which edition of the India-Japan joint military exercise Dharma Guardian was held in Japan recently? It was the 6th edition of the Dharma Guardian exercise held between India and Japan. Right? Apart from this, JIMEX and Veer Guardian are also the exercise that are held between India and Japan. Next, what is the maximum loan amount that urban cooperative banks can classify as small value loans per borrower according to the revised guidelines issued by RBI on 24th of Feb? Right? What is the limit here? 3 crore rupees. Next, the appointment committee of the cabinet recently extended the tenure of Dr. Rajiv Singh Raghuvanshi as the Drug Controller General of India in the Central Drug Standard Control Organization on a contract basis effective from 1st of March 2025. Next is, which mission data was used to generate the first ever detailed geological map of the moon's south pole in Feb 2025? It is Chandrayaan 3. Next, mention the country that topped the medal tally by securing 5 gold, 2 silver and 1 bronze at the 2025 Archery Asia Cup World Ranking Tournament Stage 1 held in Bangkok, Thailand in Feb 2025. It is our country, India. Right, 5 gold, 2 silver and 1 bronze. And here South Korea secured the second position in medal tally. Next, who has been appointed as the first ever principal secretary to the Prime Minister Narendra Modi as announced by the Appointments Committee of the Cabinet? It is Shaktikant Das. Very important, take a note of this. Next is, name the Indian Grandmaster who finished as the runner-up at the 41st Capel La Grande International Open Tournament in Feb 25 after narrowing losing to IM Mahel of France. So P. Inyan. Next is, in Feb, Government e-Marketplace celebrated 6 years of the startups, women's and youth advantage through e-transactions, that is Swayat initiative in New Delhi, under which ministry Swayat was launched in 2019. It was launched under the Ministry of Commerce and Industry. Next, identify the Indian institute that launched India's first Hyperloop test track in partnership with the Ministry of Railways in Feb 2025, marking a significant advancement in the transportation technology. It is Indian Institute of Technology, Madras. Next, mention the country that recently launched an initiative, Green Transition Alliance, that is GTAI, to strengthen the collaboration with India in sustainable energy solutions and global carbon neutrality efforts. It is Denmark. Next, which of the following banks launched India's first public sector undertaking salary account with cyber fraud protection called Anmol Savings Account in Feb 2025? It is which bank? It is HDFC Bank. And here HDFC banks provide cyber fraud cover of up to 1.5 lakh rupees to the senior citizens, and cyber fraud cover ranges from 25,000 to 50,000 for the salaried professionals. Next, in Feb, RBI reduced the risk weightage on the scheduled commercial banks loans to NBFCs by 25 basis points. What is the new risk weight assigned to these loans after the reduction? It is 100%. Next, in Feb, Hindustan Aeronautics Limited, they signed an MOU with BEML Limited for the skill development and professional excellence. This MOU was signed by Shrikanta Sharma, the executive director of the HMA, and the Mondeepa Roy, the head of the talent management at BEML. Next, Bain & Company and NASSCOM, they have jointly released a report transforming India into a tech-driven economy in Feb 2025. As per the report, by which year India is projected to become a high-income nation with a GDP between 23 to 25 trillion dollar. It is by the year 2047 when India will achieve 100 years of independence. Next, in Feb, high-level committee led by the Defense Secretary Rajesh Kumar Singh was formed to enhance private sector participation in the production of the Tejas Mk-1A light combat aircraft. Next, name the multimodal AI introduced by Microsoft capable of interpreting both images and languages while performing real-world tasks. It is Magma. Next, identify the country that recently launched Trade and Investment Accelerator Fund to expand its economic partnership with India. The country is Australia here. The focus here will be on developing superhighways of growth that includes clean energy, education and skill, agribusiness, tourism. Also, India is expected to become the third largest economy by the year 2030. Next, which of the following government initiatives signed an agreement with the
Paris Centre campus in Feb 25 to launch the Indo-French Life Sciences Sister Innovation Hub for advancing healthcare research and innovation. So which of the following government initiatives? It is Center for Cellular and Molecular Platforms. Next, mention the Indian airport that ranked 8th among the top 10 busiest airports globally as per the official airlines guide report, World's Busiest Airport 2025 released in Feb. Which is that Indian airport? It is Indira Gandhi International Airport of Delhi. Next, identify the organization that sanctioned a loan of $200 million in Feb to improve climate and disaster resilient sewerage and drainage infrastructure in Kolkata, West Bengal. So, which is that organization that has sanctioned this amount? It is Asian Development Bank. Next, in Feb, SIDBI, they collaborated with Tata Capital Limited to enhance financing opportunities for the MSMEs. Next, what was the total disbursement of the microfinance loans during the third quarter of FY25 as per the 52nd edition of the Micrometer for quarter third of FY25 report released by Microfinance Institution Network India in Feb 2025? It is 22,091 crore rupees. Next, identify the missile that was jointly tested by DRDO and Indian Navy at the Integrated Test Range Chandipur, Odisha in Feb 2025. It is Naval Anti-Ship Missile Short Range. Next, name the lunar lander that was carried aboard SpaceX Falcon 9 rocket at the third moon landing mission of 2025, Intuitive Machines 2 from NASA's Kennedy Space Center in USA. So, which is that? Name that lunar lander. It is Athena. Right, and it will be landing close to the Chandrayaan 3 landing site. Next is Gene Hackman, an Oscar-winning legend known for the films The French Connection in 1971 and Unforgiven in 1992, passed away. He was a renowned actor. Next, who recently became the first women pilot to be permanently assigned to the Indian Air Force Jaguar Fighter Squadron? So, Tanushka Singh, correct? She became the first woman pilot to be permanently assigned to the Indian Air Force Jaguar Fighter Squadron. Next, which of the following banks provided 1,100 crore rupees to GMR Airport Limited through non-convertible bonds for acquiring Freport's stake in Delhi International Airport? So, which of the following bank provided this amount? It is Deutsche Bank of Germany. Next, students, is our homework section. First, when do we observe Parakram Divas? And which edition of Parakram Divas was observed? Second, when did we observe the 53rd Statehood Day of Tripura? Along with this was the Statehood Day of which two other states? Third question, National Penguin Awareness Day was observed on which date? Fourth question, recently which state or city hosted the 7th edition of the India Boat and Marine Show? Tell me. So these are your 4 homework questions, students. Now let's move to the Hindi segment of this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 18 मार्च के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमरावती एयरपोर्ट के बारे में इन महाराष्ट्र। देन हम बात करेंगे एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी वीमेंस एम्पावरमेंट को लेके। नेक्स्ट थिंग हम बात करेंगे 11,000 करोड़ रुपए का एक लोन अग्रीमेंट साइन किया गया है अमरावती सिटी जो है कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, इसकी डेवलपमेंट के लिए। देन हम बात करेंगे पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए अभी आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने 18,360 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। एंड इसी के अलावा मैनी मोर न्यूज़ आज की वीडियो में रहेंगे स्टूडेंट्स, तो एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी अच्छा और इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा ये आप सभी के लिए। स्टूडेंट्स, हम सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर देते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड की जाती है, जिससे आपके लर्निंग में कोई कमी ना आ सके। इसी के अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हमारे साथ तो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स एंड शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स, नेबर्स एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. We have an application student by the name Careers Cloud, which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded it, you can log in it through your Gmail ID. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi.
The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. In our course, you will be able to find the quizzes that are uploaded, which will help you enhance your learning. We make sure to cover multiple banking exams that will help you to land a better job. That includes your IBPS, RRB, SBI PO, and other banking related exams. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से. हम बात करेंगे डीजीसीए की, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन. इन्होंने अभी रिसेंटली एक लाइसेंस ग्रांट किया है एंड ये है आपका एरोडोम लाइसेंस. किसको? अमरावती एयरपोर्ट को, जो कि बेलोरा महाराष्ट्र में रहेगा. करेक्ट. एंड इस लाइसेंस से अब नाउ एयरपोर्ट इज रेडी टू कमेंस द फ्लाइट ऑपरेशंस एंड ये थर्ड कमर्शियल एयरपोर्ट रहेगा इन महाराष्ट्र. नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे स्टूडेंट्स. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड यूएन वुमेन के द्वारा को होस्ट किया गया मिनिस्ट्रियल राउंड कॉन्फ्रेंस या फिर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर थी. 69th कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन के दौरान एट द यूएन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क USA. देखो, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, वीमेन को बढ़ावा देने के लिए, लीडरशिप के रोल्स में वीमेन ज़्यादा से ज़्यादा सामने आए, इनको स्किल्स लाई जा सके, स्किल सिखाई जा सके, स्टेम्स में वीमेंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके. राइट. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेलरेट करने के लिए यहाँ पे वीमेन लेड डेवलपमेंट लाने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस थी. नेक्स्ट आ जाते हैं फिर आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड न्यू दिल्ली बेस्ड HUDCO, जो कि है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आती है. इन दोनों के द्वारा अभी एक 11,000 करोड़ रुपए का लोन अग्रीमेंट साइन हुआ ताकि अमरावती सिटी को डेवलप किया जा सके. राइट. जो कि एक ग्रीन फील्ड कैपिटल सिटी होगी आंध्र प्रदेश की. कैपिटल सिटी तो अभी भी है, लेकिन इसको एक ग्रीन फील्ड कैपिटल सिटी बनाने की बात की जा रही है. इसके अंडर यहाँ पे बात की जा रही है कि 50,000 करोड़ की लागत आएगी अगर हमें अमरावती को एक ग्रीन कैपिटल बनाना है. राइट. यहीं पे हम देखेंगे 15,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भी यहाँ पे कमिट किया गया कि हम इस पैसे में इन्वेस्ट करेंगे, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे. राइट. सो टेक अ नोट ऑफ इट. आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ पर ये सेंटर में? ये है चंद्रबाबू नायडू. कैपिटल अमरावती. नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स REC लिमिटेड, जो कि है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ये एक महारत्ना CPSE है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है. इन्होंने एक MOU साइन किया है एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर गवर्नमेंट ऑफ केरला के साथ, ताकि यहाँ पे पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा सके. करेक्ट. 18,360 करोड़ रुपए की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहेगी. आने वाले 5 सालों में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी REC के द्वारा इन दिस पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स. फिर इसके बाद बात करते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की. RBI ने अभी UK डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड को जीता 2025 फॉर टेक इनिशिएटिव्स. राइट. सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशंस के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है. लंदन UK बेस्ड ये कंपनी है. करेक्ट. एंड यहाँ पर RBI के जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रहे, डिजिटल इनिशिएटिव्स रहे, उनके लिए इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया. पहला है सारथी, दूसरा है प्रभा पोर्टल. इन दोनों के लिए, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए RBI के जो इनका ये इनिशिएटिव था, इसीलिए RBI को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया. अब सारथी क्या है? सारथी हिंदी से लिया गया है चैरिटर. ये सिस्टम को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 2023 में एंड ये बेसिकली रीजन इसका क्या था? टू डिजिटाइज ऑल द इंटरनल वर्क फ्लोज ऑफ RBI एंड अलाउ द एम्प्लॉयज टू स्टोर एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड सिक्योरली उनको एक दूसरे के साथ शेयर भी किया जा सके. ये था सारथी. फिर आ जाता है प्रभा पोर्टल. प्रभा क्या है? स्मूथ फ्लो. करेक्ट. ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म था जो अलाउ करता है एंटिटीज़ को कि उनको कोई भी अगर अप्रूवल चाहिए, लाइसेंस चाहिए या ऑथराइजेशन चाहिए RBI से, तो वो ऑनलाइन इसमें अप्लाई किया कर सकते हैं एंड ऑनलाइन उनको यहाँ पे जो भी लाइसेंस है, जो भी अप्रूवल है, जो भी ऑथराइजेशन है, वो डायरेक्टली मिल जाएगा. ठीक है. सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? लंदन UK में. एंड 1990 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था. नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे. मार्क जोसेफ कार्नी, इनको स्वॉन इन किया गया या फिर ये 24वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं कनाडा के. ये किनको सक्सीड करेंगे? जस्टिन ट्रूडो को सक्सीड करेंगे, जो कि 9 साल से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे थे.
नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर साइंस एंड टेक पर। इसरो ने अभी कंडक्ट करा फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन फॉर LV-M3-M6 मिशन। CE-20 इस क्रायोजेनिक इंजन का भी टेस्ट किया गया है एंड इस इंजन को ये जो आपका क्रायोजेनिक इंजन है इसको फर्दर यूज़ किया जाएगा चंद्रयान 5 एंड लूपेक्स मिशन के दौरान, जो कि एक्सपेक्टेड है सून हम यहाँ पे लॉन्च करेंगे, राइट। तो इसरो ने इसको टेस्ट किया था, मार्क करेंगे। इसरो के चेयरपर्सन कौन बने हैं नए? वी नारायण। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटका में। 1969 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था इसरो को। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स इसरो एंड SCL। इसरो तो हम जानते हैं बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड है। SCL क्या है? यह है आपकी चंडीगढ़ बेस्ड सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी। इन दोनों के द्वारा मिलकर 32 बिट के 2 माइक्रो प्रोसेसर्स बनाए गए हैं जो कि स्पेस एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाएंगे। पहला है विक्रम 3201 और दूसरा है आपका कल्पना 3201। तो ये दो वो आपके 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स रहेंगे जो कि स्पेस एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किए जाएंगे एंड इसरो एंड चंडीगढ़ बेस्ड SCL के द्वारा इनको यहाँ पे डेवलप किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर स्टूडेंट्स। नई ईल स्पीश डिस्कवरी की गई है अभी कहाँ पर? थूथुकुडी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु के दौरान के वहाँ पर एंड तमिलिसियम इसका नाम रखा गया आफ्टर द ओल्डेस्ट लैंग्वेज जो कि है तमिल। नेक्स्ट आ जाते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दौरान। ये आपका 5वां एडिशन था। यहाँ पर आप लेफ्ट में देख सकते हैं स्नो लेपर्ड, ये यहाँ पे मैस्कॉट था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जिसका 5वां एडिशन था। लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में खेला गया था ये एंड यहाँ पर इंडियन आर्मी ने टॉप किया है इन द मेडल टैली। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन आर्मी फर्स्ट, सेकेंड हिमाचल प्रदेश, थर्ड लद्दाख एंड फोर्थ महाराष्ट्र रहेगा इस मेडल टैली में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर लैंडो नॉरिस। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं ये मैकलेरन के ड्राइवर हैं एंड इन्होंने अभी F1 सीजन जीत लिया ऑफ ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किन के द्वारा जीता गया? लैंडो नॉरिस ऑफ मैकलेरन। सेकंड पोजीशन पे कौन रहे? मैक्स वर्स्टैपन। थर्ड पे जॉर्ज रसल। इसके बाद आ जाते हैं इंडिया ने अभी इंडिया मास्टर्स, ये वो टीम होती है बेसिकली जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स होते हैं राइट ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी कंट्रीज़ के खुद सब मिलके एक इवेंट करते हैं यहाँ पे। तो इंडिया मास्टर्स यहाँ पे लेड की गई थी सचिन तेंदुलकर जी के द्वारा, करेक्ट। एंड इन्होंने यहाँ पे इंडियन मास्टर्स ने IML है इंटरनेशनल मास्टर्स लीग, राइट, 2025 का टाइटल जीत लिया है। इन्होंने किन को हराया? वेस्ट इंडीज़ को फाइनल में हराया। वेस्ट इंडीज़ को कौन कैप्टन कर रहे थे? ब्रेन लारा। नेक्स्ट आ जाते हैं रिनोन्ड ओडिया पोएट एंड पद्मा भूषण अवार्डी रामाकांता रथ। इनका रिसेंटली निधन हो गया, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं रामाकांता रथ का, राइट। पद्मा भूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था सन 2006 में एंड काफ़ी फेमस ओडिया पोएट रह चुके हैं ये। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंबर ऑफ ईस्टरवाइल रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ एंड चेयरमैन ऑफ HRH ग्रुप ऑफ होटल्स अरविंद सिंह मेवाड़। इनका रिसेंटली निधन हो गया, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। 81 की एज में निधन हुआ। 1944 की एज में इनका जन्म हुआ था उदयपुर में, राइट। एंड ये एक एक्टिव क्रिकेटर थे थ्रू 1960s एंड 1970। रणजी ट्रॉफी में भी इन्होंने डेब्यू किया था एंड इनके उदयपुर में भी इन्होंने काफ़ी प्रमोट किया था क्रिकेट को एंड रिसेंटली इनका निधन हो गया। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट डेज पे। वर्ल्ड स्लीप डे 14 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है फ्राइडे बिफोर द स्प्रिंग वर्नल इक्विनॉक्स। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है स्लीप के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कि स्लीप हमारी बॉडी पे कितना इम्पैक्ट डालती है एंड प्रॉपर मैनेजमेंट एंड स्लीप का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, करेक्ट, जिससे हमारी बॉडी ठीक रहे। इस बार हमने इसको कब ऑब्जर्व किया? ये पहली चीज़ तो 18th एनुअल स्लीप डे था, 14 मार्च को ऑब्जर्व किया गया था 2025 में। इसका एक स्लोगन या थीम याद रखेंगे जो कि है मेक स्लीप हेल्थ अ प्रायोरिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे। 16 मार्च को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली वैक्सीन्स का जो यूज़ है पब्लिक हेल्थ के ऊपर, राइट, जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ के टाइम पे जो वैक्सीनेशंस यूज़ की जाती हैं उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व किया गया था और बिकॉज ऑफ द फर्स्ट डोज ऑफ द ओरल पोलियो वैक्सीन जो कि 1995 में दी गई थी उसको एडमिनिस्टर करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है फिर ऑर्डेंस फैक्ट्री डे। ये 18 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली जो ऑर्डेंस फैक्ट्री होती है, राइट, उसका जो कमेमोरेशन था ऑर्डेंस फैक्ट्री बोर्ड का 1801 में, जिसकी जो पहली ऑर्डेंस फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी कोलकाता वेस्ट बंगाल में इन 1801, उसके अवेयरनेस के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये ऑर्डेंस फैक्ट्री बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन, टेस्टिंग, लॉजिस्टिक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलती है ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू लैंड, सी एंड एयर सिस्टम। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर स्टूडेंट्स। अभी तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर थंगम
थेनेरासू, इन्होंने प्रेजेंट किया स्टेट बजट फॉर FY26 विद अ टोटल बजट ऑफ 4,39,293 करोड़ रुपीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें से 55,000 करोड़ रुपए आपके एजुकेशन के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए 34,000 करोड़ रुपए एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए 29,000 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। देन स्टूडेंट्स, इफ वी लुक एट सम वन लाइनर्स, रिसेंटली Sujkai is basically developed by whom? This is an AI powered assistant, right? It was launched for Thailand tourism. Right? Then who launched this? So Wipro has launched this Sujkai. Take a note of this. Then recently, Bima Sakhi Yojana. Bima Sakhi Yojana was launched for whom? It was launched for women, right? Launched by Prime Minister Narendra Modi. Then next thing, there was a Prasashan Gaon Ki Aur. That is Prasashan Gaon Ki Aur. This was a scheme launched for what? So Prasashan Gaon Ki Aur. This scheme was launched basically to improve the service delivery. It was launched for improving the service delivery, correct, in rural areas. That is Prasashan Gaon Ki Aur. Then apart from this, recently remember First India Maritime Heritage Conclave 2024. It concluded where? It concluded in New Delhi. Then who inaugurated the 10th edition of World Ayurveda Congress 2024? It was inaugurated by the Chief Minister Pushkar Singh Dhami. And where was it held? It was held in Dehradun. Correct. Apart from this, recently, which person became the first person to achieve $400 billion net worth, right? This is the net worth of an individual. He is Elon Musk and he became the richest person in the history. Apart from this, if I ask you which country has recently attained, so I have given the answer. It is India has attained $1 trillion in FDI, right? Your homework is to tell me which country or from which country the highest FDI India has received. Tell me. This is your homework. Correct? Then apart from this, if I ask you who has been appointed as the Speaker of the 6th Jharkhand Legislative Assembly. So Rabindra Mahato, who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Trans Union Civil. So Bhavesh Jain has been appointed as the Managing Director and CEO of Trans Union Civil. Then apart from this, recently which INS was delivered or which INS was commissioned when Rajnath Singh was on a visit to Russia? So name of that INS is INS Tushil, right? This was commissioned by India in the Indian Navy. Then who won the ACC Under 19 Men's Asia Cup title? This was held in Dubai, the final, and who won it? It was won by Bangladesh, right? Question can be also asked that who retained this title? So Bangladesh retained it as Bangladesh won it for the second consecutive time. So last year also it was Bangladesh who won this title. Then who became the youngest world chess champion? So D. Gukesh. He became the world's youngest chess champion, right? Then apart from this, tell me, when do we observe International Anti-Corruption Day? International Anti-Corruption Day. So when do we observe this day? It is observed on 9th of December. One more thing, students, if I ask you,
recently, in order to develop Amravati in Andhra Pradesh, which organization has given a loan worth $200 million to Andhra Pradesh, that is for the development of Amravati in Andhra Pradesh? So this is Asian Development Bank. Tell me, recently Ministry of Defense have recently signed a contract worth 136 crore rupees. It is for the procurement of an aircraft, and 12 such aircrafts will be procured. Which are these aircraft? These are Sukhoi 30 Mark 1 aircraft. 12 of these Sukhoi 30 Mark 1 aircrafts will be procured, right? And this contract has been given to which organization? It was given to Hindustan Aeronautics Limited. So Hindustan Aeronautics Limited will be delivering these 12 Sukhoi 30 Mark 1 fighter jets. These are worth 136 crore rupees, and Ministry of Defense gave Hindustan Aeronautics Limited the contracts for the same. Correct. One more question. Recently, we are talking about Abu Dhabi Grand Prix. Abu Dhabi Grand Prix. Who won this Abu Dhabi Grand Prix? It was won by Lando Norris. It was won by Lando Norris, right? Lando Norris, he drives for which company? He drives for McLaren. He drives for McLaren. Take a note of this, right? So Abu Dhabi Grand Prix won by Lando Norris, and Lando Norris drives for McLaren. Correct? Then tell me, students, Women's World Cup, right, will be held recently. Correct? It will be held, or 20, it will be held when? It will be held in 2027. It will be held where? It will be held in Brazil. It will be held in Brazil. And one more thing related to Brazil, that Brazil is having the chairmanship of BRICS recently, right? Who held the chairmanship of BRICS earlier? It was with Russia, right? This year it was with Russia. And it in Russia too, it was held where? In Russia, it was held in Kazan. And recently in Kazan, there was a drone attack. This drone attack was done by Ukraine, right? And it was similar to that of 9/11 that took place in USA. Correct? So remember these things. Correct? Women's World Cup in Brazil. Brazil having the chairmanship of Russia BRICS this time. Russia handed it over to Brazil, right? And in Russia, the BRICS summit was held at Kazan, and in Kazan recently there was a drone attack. Correct? So these are some important revision current affairs, students. Now let's move to the main content. Next है Datia Airport, that is located in Dash, received a public aerodrome license under the 3C Visual Flight Rules category from Directorate General of Civil Aviation. तो डाटिया एयरपोर्ट, राइट, इन्होंने जो कि लोकेटेड है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, एंड ये मध्य प्रदेश का 8th पब्लिक एयरपोर्ट बन गया है, राइट? इनको अप्रूवल मिल गया फॉर पब्लिक यूज़. नेक्स्ट, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी, जो कि नीति आयोग के द्वारा फॉर्म की गई थी ताकि प्लान डेवलप किया जा सके कि एम्स को यहाँ पे डेवलप किया जा सके इनटू अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर मेडिकल प्रैक्टिसेस एंड रिसर्च. तो कौन यहाँ के कमेटी के चेयरपर्सन रहेंगे? वो हैं डॉक्टर VK पॉल. नेक्स्ट, अभी 51st इनॉग्रेशन हमें देखने को मिला खजुराहो फेस्टिवल का. ये खजुराहो डांस फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ. एंड इसके दौरान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप किया गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, जहाँ पे 139 क्लासिकल डांसर्स इन्होंने कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म किया 24 आवर्स के लिए इन अ क्लासिकल डांस रिले मैराथन. नेक्स्ट, अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सेकंड प्लेनरी मैक्सिको एलिसा दे एंड द माजोस 2-year प्रेसिडेंसी हुई, जहाँ इन पेरिस फ्रांस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे इससे रिस्पेक्टिव में गलत है? गलत है पूछा है, राइट? विच इज द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए सही है एंड सी सही है, बी गलत है. बी कह रहा है कि फिलीपींस को तो ऐड किया गया FATF की लिस्ट में, वहीं पे लाओस एंड नेपाल को रिमूव कर दिया गया इस लिस्ट में से. तो नहीं, FATF फिलीपींस को तो रिमूव किया गया है, वेयर एज लाओस एंड नेपाल को इनको ऐड किया गया है इन दिस लिस्ट. नेक्स्ट आ जाते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करो रिगार्डिंग द 17th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड 8th एडिशन ऑफ द नेवल डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन इन Feb 2025 UAE में. अगर यहाँ पे हम देखें तो इसमें से आपका ऑप्शन ए सही है. आपका यहाँ पर ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा ना,
तो ए और बी इनकरेक्ट है यहाँ पे आपके, राइट, सी सही है। रीजन भी बस इनको अपोजिट कर दो कि कल्याणी सिस्टम्स लिमिटेड ने इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया MER 5G को, वहीं पे जो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है इन्होंने यहाँ पे अनवेल किया लाइट आर्मर्ड मल्टी रोल व्हीकल को, राइट। ये वीजा भी दे रखे हैं, उल्टे दे रखे हैं। नेक्स्ट, इन फेब इंडिया ने अग्री किया टू लॉन्च अ न्यू हॉटलाइन फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द बॉर्डर फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। दिस वाज ड्यूरिंग द 55वीं डायरेक्टरेट जनरल लेवल बॉर्डर कॉन्फ्रेंस जो कि कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस जो कि दिल्ली में हुई। इससे इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर लेवल जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जो कि लॉन्च किया गया, जिन्होंने लॉन्च की 3 इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग छोटी SIP, तरुण योजना एंड मित्रा को। किनके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। छोटी SIP है, 250 रुपये की SIP प्लान रहेगा यहाँ पे। तरुण योजना ये क्या है, स्कूल्स में बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अवेयर कराना। एंड मित्रा आ जाता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। नेक्स्ट, इन फेब किस कंट्री ने ऑनर किया गया विद प्रिंस माइकल डेकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड अलॉन्ग विद द किंगडम ऑफ मोरक्को एट द 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी इन मराक मोरक्को। तो वो है कौन सी कंट्री, इंडिया। नेक्स्ट, इन फेब सुनील भारती मित्तल वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल डैश फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग बिजनेस रिलेशन बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया। तो सुनील भारती मित्तल इनको किससे सम्मानित किया गया, नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से। इनको 2007 में पद्मा भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। एंड एज ऑफ 2024 ये इंडिया के 7th रिचेस्ट पर्सन है। नेक्स्ट, नेम द न्यू कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसको भी चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया यूजिंग द लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट इनटू जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, ताकि चाइना सेट 10 सैटेलाइट को ये रिप्लेस कर सके। तो ये सैटेलाइट रहेगी चाइना सेट 10N के नाम से। नेक्स्ट, हु वन द मेंस टाइटल एट द 2025 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जो कि कतर में हुई इन फेब बाय डिफीटिंग अमीर सरकोश। तो किन्होंने जीता, पंकज आडवाणी जी के द्वारा इसको जीता गया। यहीं पे याद रखेंगे इंडियन गवर्नमेंट ने इनको कई सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जैसे अर्जुन अवार्ड से 2004 में सम्मानित किया, खेल रत्न अवार्ड से 2006 में सम्मानित किया, पद्माश्री से 2009 में सम्मानित किया एंड पद्मा भूषण से 2018 में सम्मानित किया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द रिनोन्ड ओडिसी डांसर एंड पद्माश्री अवार्डी जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 92 इन फेब 2025। वो है मायाधर रॉथ। नेक्स्ट, which location was officially upgraded to Nagaland's 17th district by Chief Minister of Nagaland। तो वो कौन सी है जो 17th डिस्ट्रिक्ट बनी नागालैंड की, वो है मेलूरी। नेक्स्ट, मेंशन द इंश्योरेंस कंपनी जो दैट बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च द बीमा एसबा फैसिलिटी टू मेक प्रीमियम पेमेंट्स ईजियर एंड मोर ट्रांसपेरेंट एज गाइडेड बाय IRDAI। तो ये है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इनॉग्रल सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 हेल्ड, जहाँ पे PM मोदी ने पार्टिसिपेट किया, इन विच भूटान प्राइम मिनिस्टर डाशो शेरिंग टॉकबे ने भी पार्टिसिपेट किया ऑन हिज विजिट टू इंडिया। तो ये सोल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 19th इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान स्कीम को लॉन्च किया, तो बिहार में लॉन्च किया था ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेसिपिएंट्स ऑफ द नेशनल धनवंतरी आयुर्वेदा अवार्ड 2025 के लिए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा दिए गए, तो वैद्य ताराचंद शर्मा, वैद्य मायाराम उनियाल एंड वैद्य समीर गोविंद जमदगनी, राइट। इन तीनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया नेशनल धनवंतरी आयुर्वेदा अवार्ड से। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूट दैट रिसेंटली साइंड 2 MOUs विद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू एनहेंस इनोवेशन, डाटा एनालिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस। तो कौन सी IIT रहेगी, वो है IIT मद्रास। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनॉग्रेशन ऑफ आदि महोत्सव 2025 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम इन दिल्ली 2025। तो यहाँ पे अगर हम देखें करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है आपको, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, मेंशन द ग्लोबल इनिशिएटिव दैट द भारतीय मजदूर संघ ज्वाइन ड्यूरिंग द 74th फाउंडेशन डे ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑन 24th ऑफ फेब इन न्यू दिल्ली। तो नेम दैट ग्लोबल इनिशिएटिव, वो है ग्लोबल कोलिएशन फॉर सोशल जस्टिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सा एडिशन ऑफ इंडिया जापान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन हुआ भी जापान में, तो ये 6ठा एडिशन था। इसके अलावा इंडिया और जापान के बीच में वीर गार्डियन एंड जाइमैक्स भी एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के द्वारा अंडर द SIB क्विक पैल प्लेटफॉर्म फॉर न्यू कस्टमर्स। तो पर्सनल लोन का ये नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट दैट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अब क्लासीफाई कर सकते हैं एज द स्मॉल वैल्यू लोन्स पर बोरोवर अकॉर्डिंग टू द रिवाइज गाइडलाइंस बाय RBI। तो लिमिट है 3 करोड़ रुपए।
नेक्स्ट एसीसी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी एज what as the director drug controller general of India in the Central Drug Standard Control Organization on a contract basis, जो कि 1 मार्च 2025 से स्टार्ट होगा. नेक्स्ट, और 1 साल तक इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है. नेक्स्ट, व्हाट विच मिशन डाटा वाज यूज्ड टू जनरेट द फर्स्ट एवर डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून साउथ पोल. तो कौन सा है, वो है चंद्रयान 3, राइट. और अभी एथेना भी एक मिशन है नासा का ही, जो कि लैंड करेगा नियर द चंद्रयान 3. नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री जिन्होंने टॉप किया मेडल टैली में बाय सिक्योरिंग 5 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज एट द 2025 के आर्चरी एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुआ. तो इंडिया ने मेडल टैली में यहाँ पे टॉप किया, मार्क करके चलेंगे. एंड साउथ कोरिया सेकंड पोजीशन पे था मेडल टैली में. नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज अनाउंस्ड बाय एसीसी. तो किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पे, शक्तिकांत दास जी को. नेक्स्ट, नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर जिन्होंने फिनिश किया एज द रनर अप एज द 41st कैपेला ग्रैंडे इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट, जो फेब में हुआ आफ्टर नैरोली लूजिंग टू IM महल ऑफ फ्रांस. तो वो है पी इनिया. नेक्स्ट, इन फेब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम, इन्होंने सेलिब्रेट किया 6 ईयर्स ऑफ स्वायत्त इनिशिएटिव इन दिल्ली, अंडर विच मिनिस्ट्री स्वायत्त वॉज लॉन्च्ड इन 2019. तो किस मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर इसको लॉन्च किया गया था. Next, identify the Indian institute that launched India's first Hyperloop test track in partnership with Ministry of Railways, marking a significant advancement in transportation technology. तो वो है Indian Institute of Technology, मद्रास. नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री दैट रिसेंटली लॉन्च इनिशिएटिव GTAI, जो कि है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, ताकि इंडिया के जो सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस हैं एंड ग्लोबल कार्बन न्यूट्रलिटी एफर्ट्स है उनके ऊपर काम किया जा सके. तो वो कौन सी कंट्री है, डेनमार्क और इंडिया के बीच में यहाँ पे GTAI इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया. नेक्स्ट, किसने अभी किया, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सैलरी अकाउंट विद साइबर फ्रॉड प्रोटेक्शन कॉल्ड अनमोल सेविंग अकाउंट इन फेब 2025. तो वो है HDFC बैंक, राइट. टेक अ नोट ऑफ दिस. एंड HDFC बैंक प्रोवाइड कराएगा साइबर फ्रॉड कवर अप टू 1.5 लाख रुपीज टू सीनियर सिटीजन एंड 25,000 से 50,000 तक का साइबर फ्रॉड टू द प्रोफेशनल्स. नेक्स्ट, RBI ने रिड्यूस किया रिस्क वेट ऑन द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स लोन्स टू NBFCs बाय 25 बेसिस पॉइंट. व्हाट इज द न्यू रिस्क वेट असाइन टू दीज लोन्स आफ्टर द रिडक्शन, तो 100%. नेक्स्ट, इन फेब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन्होंने साइन किया एक MOU किसके साथ, फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस. तो किसके साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये साइन किया, BEML के साथ ये MOU साइन किया. नेक्स्ट, बेन एंड कंपनी एंड नास्कॉम, इन्होंने जॉइंटली रिलीज की ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ टेक ड्रिवन इकोनॉमी 2025 की ये रिपोर्ट. पूछा जा रहा है एज पर द रिपोर्ट बाय विच ईयर इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम अ हाई इनकम नेशन विद GDP बिटवीन 23 to 35 ट्रिलियन डॉलर. तो 2047 का ये टारगेटेड ईयर है, राइट. एंड 2047 क्यों, क्योंकि 100 साल ईयर हमारे 100 साल पूरे हो जाएंगे हमारे इंडिपेंडेंस को. नेक्स्ट, इन फेब हाई लेवल कमेटी लेड बाय डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह, ये फॉर्म की गई टू एनहेंस प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ तेजस Mark 1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. Next, name the multimodal artificial intelligence introduced by Microsoft capable of interpreting both images and languages while performing the real world task. तो ये कौन सी है, ये है मैग्मा. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने लॉन्च किया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर फंड को टू एक्सपेंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप विद इंडिया. तो ये रहेगी ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया पेरिसेंटे कैंपस के साथ इन फेब, ताकि इंडो फ्रेंच लाइफ साइंस सिस्टर इनोवेशन हब को लॉन्च किया जा सके, ताकि हेल्थ केयर सेक्टर में रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके. तो ये है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स. नेक्स्ट, मेंशन द इंडियन एयरपोर्ट जिसकी रैंक 8th रही अमंग द टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स ग्लोबली अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एयरलाइन गाइड की जो ये रिपोर्ट रिलीज की गई. तो ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है. नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स होमवर्क सेक्शन पे. पहला, विजय हजारे ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई. सेकंड, इसका एक चीज़ और, ये फाइनल्स कहाँ पर हुआ था, लोकेशन क्या था, और विजय हजारे ट्रॉफी का कौन सा एडिशन था, राइट. देन खो खो वर्ल्ड कप कौन सा एडिशन खेला गया था, अभी कहाँ पर खेला गया था, होस्ट कंट्री कौन सी थी, एंड मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी में किन्होंने जीता. थर्ड क्वेश्चन, इंडिया ओपन किसके द्वारा जीता गया, मेंस कैटेगरी में बताओ. एंड फोर्थ क्वेश्चन, इंडियाज फास्टेस्ट वीमेन ODI सेंचुरी किसके द्वारा बनाई गई. आई रिपीट, इंडिया की फास्टेस्ट
ओडीआई सेंचुरी मतलब 100 रन किसके द्वारा बनाए गए, वीमेंस में, इंडियाज फास्टेस्ट वीमेंस सेंचुरी, राइट, ये बताना है। तो दोस्तों ये 4 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से।